Good morning. This is Awadesh, and at Praadis Educations, today we are about to stress on PYQs, previous year's questions. Those who are preparing for NEET aspirants, so today the topic to which we have actually completed, that is cell cycle and cell divisions. So on the basis of that, the previous year questions would be discussed, or whatever the doubt is there, that's going to rectify, so that you can give your best during your exams, right? So good morning Devendra, Sanyogita, good morning. Today we have a biology PYQs in the morning, so that we can utilize this time and give our best. Let's wait for one more minute so that rest of the student can join us. Yeah, Divyanshi. Good morning Divyanshi, good morning. Good morning Devendra. Good morning. So we are about to start. Let's begin the journey for previous year's questions, in which I'll show you the questions along with the options, and you have to respond in the chat box of your answers. Then I'll let you know the correct one, and we'll discuss about what the actually the correct one is. Here we go. Let's begin. Best of luck. The chapter based is cell cycle and the cell divisions. The first question is, that was asked in the year 2009. Synapses occurs in between. किसके बीच में synapses बनते हैं? Right. Number one, spindle fibers. Okay, you all are started to answer. That's amazing. Spindle fibers and centromeres, messenger RNA and ribosome, a male and a female gamete, and the two homologous chromosomes. Right. So everybody responded option D, that is two homologous chromosomes. Is that clear? Okay. So we are moving toward our question number 2, that was also asked in the year 2009. Given below is a schematic breakup of phases of cell cycle. जो सेल साइकिल है ये उसका एक ब्रेकअप है, और आपको बताना है गिवन वाले ऑप्शंस में विच वन इज करेक्ट इन A, B, C, D. हैव यू सीन दिस क्वेश्चन? देखा? बिकॉज इसके कुछ ऑप्शंस जो हैं वो नीचे भी हैं सेकेंड शीट में. सो हैव यू गॉन थ्रू दिस पिक्चर properly went? Okay. Option A, cytokinin, B, metaphase, C, karyokinesis, and D, synthetic phase. आपको यहाँ पे बताना है which one is correct matching. Schematic breakup of phases of cell 1, A, B, C. A, it's A, cytokinins, B, metaphase, C, karyokinesis, and D, synthetic phase. The which one is a correct matching?
You answered? I am waiting for your response, dear students. Yes. Yes, everybody answer me. The correct option is D, synthetic phase. Okay. Now we are moving toward question number 3. During the cell cycle, RNA and proteins are synthesized in what? It was also asked in the year 2009, and your options are these. During cell cycle, RNA and protein are synthesized in which phase? Either phase S, A option, option B, G1 phase, option C, G2 phase, and option D, both B and C. The question is about in which phase RNA and protein are synthesized. Oh. Think about. Divyanshi had answered. Okay. Waiting for others' response. Okay. Yes, Mehar, Devendra, Sanyogita, your answers. I'm waiting for your response too. G. Okay. Divyanshi answered D. Mehar also replied D. Okay. And Devendra also replied D. The correct option is D. The correct answer is D, because G1 and G2 are that phase. They are the phases where RNA और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जबकि जो फेज S है, S फेज में किसका सिंथेसिस होता है? क्या प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है? what actually work in S phase? स्टूडेंट्स, कौन सा प्रोसीजर होता है? याद करो द साइकिल. हाँ, एब्सोल्युटली परफेक्ट. Okay. So, we are moving toward question number 4. It was asked in the year 2010. हमें यहाँ पर दो diagrammatic presentations दिए हैं. There are two diagrammatic presentations. और इसमें which stages of cell division do the following figures A and B represent respectively? Think about, stress on, which stages of cell division do the following figures A and B? What would be? Have you seen the figure properly? Let's move toward the options.
Option A. The first one is telophase, second one is metaphase. Option B. Late anaphase and the prophase. Option C. Prophase and anaphase. Or option D. Metaphase or telophase. The given illustration, the given diagrammatic illustration is actually representing what? Recall karo, recall, think about what had sir told in the class. Okay, very smart, quick response. Devendra has answered. Okay, Devyanshi has also responded. Yes. What about Meher, Sanyogita? Students, you must be quick. And the correct answer is B itself. That is the late anaphase and prophase. Okay. Now, question number 5. During mitosis, माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है उस दौरान FR and nucleolus begin to disappear. FR क्या है यहाँ पे दिव्यांशी? What is FR? During mitosis, मैंने बताया था, I told in the class. During mitosis, माइटोसिस की जो प्रोसीजर होती है उसमें FR और जो न्यूक्लियोलस हैं they begin to disappear. Yes. हाँ, that is ER, not FR, exactly, endoplasmic reticulum and the nucleolus. Okay, so कौन सी phase में they start disappearing? Divyanshi responded. Okay. What about others? Does it disappear at the early metaphase or it disappears late metaphase or it occurs early prophase or it occurs at late prophase? Yes, the option is fifth ka D, that is the late prophase. Okay. Question number 6. It was also asked in the year 2010. DNA और द क्रोमोसोम रेप्लिकेशन या फिर जो क्रोमेटिड फॉर्मेशन है इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विच फेज? वेरी क्विक दिव्यांशी. यस, एवरीबडी. मेहर ऑल्सो रिप्लाइड वेरी क्विक. अमेजिंग. DNA क्रोमोसोम रेप्लिकेशन और क्रोमेटिड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. बच्चों जरा ध्यान से. Look at proper. DNA or the chromosome replication or the chromatids formation takes place. Yes, everybody answered. That is C in S phase. Now, we are moving toward the question number 7.
that was asked in the year 2011. Sanctum formation takes place if the cytokinesis is not allowed by karyokinases. B. Karyokinases does not occur. Option C. Karyokinases is not followed by cytokinesis. Or it's D. Both. Both karyokinases and cytokineses are prevented. Think about where actually sanctum formation takes place. Okay, everybody answered. बेटा पहले मुझे 7th का तो बता दो, then move toward the 8th one. Let me answer. The correct option for the 7th one is C. Okay, that karyokinases is not followed by the cytokinesis. Question number 8. That was also asked in the year. Crossing over requires an enzyme. जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है उसमें किस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है? विच एंजाइम इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉसिंग ओवर? अरे वाह, यस, मेहर, दिव्यांशी, दे ऑल आर रिस्पॉन्डेड. Absolutely perfect. Everybody answered. That is a recombinase. Yes, the procedure of recombination that actually occurs. The crossing over requires, you remember? Remember that? Overlapping, right? So, that is perfect. Okay. Genius. So, dear students, we are moving toward the question number 9 itself. That was also asked in the year 2011. Question number 9. इसमें क्या करना है? हमें सिलेक्ट करना है करेक्ट मैचेस को. Okay, which one is correctly matched? Okay, क्वेश्चंस देखें हम. ये हमारे क्वेश्चंस के हैं पार्ट्स. S phase, that is DNA replication. B phase, zygotine, the synapsis occurs. C, याद करो कौन सा वाला पार्ट था? डिप्लोटीन, जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है ना. D, meiosis, both haploid and diploid cells. And gap 2 phase. Don't be in hurry. सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखो. Just check out all the matches and tell me which one is the accurately or correctly matched. Select the final one. A, S phase, DNA replication. B, zygotine, synapses. C, diplotyne, crossing over. D, meiosis, both haploid and diploid cells, while the fifth one, gap 2 phase with quiescent trees, that is G naught. And your options are which one is correct? Which option is correct, बच्चों? Reply. It's C.
diplotin that occurs crossing over, and gap 2 phase, its quiescent. Why? Got it? So the next question that was also asked in the year it's A. S phase DNA replication होता है and B zygote. Yes, the correct option is A instead of C. Yes. Now the question number 10 that was also asked in the year 2010. You have to select the correct option with respect to mitosis. Okay, you have to select the correct options with respect to mitosis, जिसमें पहला Golgi complex and endoplasmic reticulum are still visible at the end of prophase. ठीक है संयोगिता, if you are willing to answer, just do mention in the chat box beta. Question number 2. Chromatids separate but remain in the center of cell in anaphase. That option C, chromosomes move to spindle equator and get aligned along equatorial plate in metaphase, or chromatids start moving towards opposite poles in telophase. Okay, Golgi complex and endoplasmic reticulum are still visible at the end of prophase. Sanyogita, Sanyogita, yes, it's C. The chromosomes which move to spindle equator and get aligned along equatorial plate in metaphase. Got it? Now we are moving toward question number 11 that was also asked in the year 2011. What is this? Which is not characteristics of meiosis? Which is not the characteristic of meiosis? ये meiosis का एक characteristic नहीं है. ये meiosis का एक characteristic नहीं है. What is that? 2 stages of DNA replication. First before meiosis 1 and second before meiosis 2. Recombination and crossing over. Sister chromatids separate during anaphase. Nuclear membrane disappears towards end of prophase. Question number 11. Which is not the characteristic of meiosis? Two stages of DNA replication. First before meiosis 1 and second before meiosis 2. Recombination in the crossing over, ये भी होता है. Sister chromatids separate होते हैं during anaphase 2, ये भी होता है. Nuclear membrane disappears towards end of prophase. So final answer is A, which is not the characteristics of meiosis. That is 2 stages of DNA replication.
first before meiosis 1 and second before meiosis 2. That actually doesn't occur. So here question number 12 that is being occurred, actually it was also asked in the year 2011. The spindle fibers are attached to the chromosomes in the region of. Spindle fibers are attached to the chromosome in the region of centromere, chromomere, chromonema or kinetochore. Question number 12 that says जो स्पिंडल फाइबर है अटैच टू क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से अटैच होता है किस रीजन पर? राइट, ए सेंट्रोमेयर सेंट्रोसोम, दूसरा क्रोमोमेयर, तीसरा क्रोमोनेमा और चौथा काइनेटोकोर. भूल गए द टर्म विच आई हैड explained, kinetochore, where the spindle fibers moving toward pulling. कुछ याद आया? क्यों दिव्यांशी नहीं आ रहा है? Okay, the next question is longest phase of meiosis. मियोसिस में जो सबसे लंबी फेज होती है वो किस सब डिवीजन की होती है? प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2. यस, सबके फटाफट करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं. दिस इज एब्सोल्युटली प्रोफेज 1, राइट? या, नो डाउट. क्वेश्चन नंबर 14. Sagging connecting meiosis 1 and meiosis 2. कौन सा स्टेज है जब meiosis 1 और meiosis 2 they connect together? And your options are interphase 1, interphase 2, interkinesis or anaphase. Question number 14 says meiosis 1 और meiosis 2 का जो connections हैं, they meet, they begin from where? Which stage is that? A, interphase 1, B, interphase 2, C, that is interkinesis, or D, anaphase 1. Absolutely perfect Divyanshi, it is inter, in between. बच्चों दो टर्म से एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, राइट? सो इंटर इन बिटवीन और इंट्रा मतलब विद इन. So they are the terminologies that actually tell us about. So stress on all the words, है ना? Now we are moving toward question number 15. एक फिगर है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? It was also asked in the year 2011. ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? What is this figure actually representing? ये प्रोफेज 1 की स्टेज है, ये प्रोफेज 2 की स्टेज है, या प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, या फिर प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस? यस, एवरीबडी इज आंसरिंग क्विक, वेरी गुड. योर रिस्पॉन्स इज सो क्विक. यस, Devendra, Khurshida, they are waiting for your response, beta. Mehar. The option is none other than A, prophase 1. Correct. Question number 16. That was asked in the year 2012.
आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज, हमें मियोटिक स्टेज में इस चीजों को फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट with the sister chromatids and remain associated at their centromere. Homologous chromosomes, that we know, है ना, separate अलग होते हैं, while the sister chromatids remain associated at their centromere. तो वो कौन सी स्टेज होती है मियोटिक डिवीजन में? Which stage is that occurs in meiotic division? Yes, the most of the answers are correct. It is C, anaphase. Absolutely perfect. Question number 17. ईस्ट अपना जो साइकिल है, सेल साइकिल, वो कितने मिनट में कंप्लीट कर लेता है? A yeast completes its cell cycle in how many minutes? The lifespan is about what for its completing a cell cycle of a yeast? That was asked in the year 2012. Yes, everybody answered. That is 90 minutes. 1 hour 30 minutes a yeast completes its life cycle. Now, question number 18. क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या बता रहा है? चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर्स एंड द करेक्ट ऑप्शंस. लैप्टोटीन, इसमें क्रोमोसोम जो हैं इनविजिबल हो जाते हैं. जाइगोटीन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर. पैकेटीन, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस. डी, Diplotin, bivalent chromosomes appear as tetrad. Dikinesis, termination of 𝐭𝐻 takes place. Go through with the proper questions. Leptotin, क्या उसमें क्रोमोसोम्स इनविजिबल हो जाता है? जाइगोटीन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर बना लेता है. Zygotin, third one is Packetine, dissolution of cynotomal complex takes place. Diplotin, bivalent chromosomes appears as tetrad. Or dikinesis, terminalization of 𝐭𝐻 takes place. Which is the correct option? Come on बच्चा, जल्दी रेस्पॉन्स करिए. The correct option is, obviously that you all responded, is C. जाइगोटीन, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है. और डाइकाइनेसिस, the term actually defining termination of 𝐭𝐻 takes place. Now we are moving toward question number 19 that was also asked in the year 2012. Question number 12 हमें क्या बताता है? Which is not a characteristic of telophase.
ये टीलोफेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनमें से कौन सी नहीं है? नंबर 1, chromatin condenses to form chromosomes, nucleus, Golgi complex और endoplasmic reticulum form. C, nuclear envelope assembles around chromosomes clusters. D, centromeres split and chromatids separate. या फिर E, chromosomes clusters or they identify the identity is lost. इनमें से टीलोफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा नहीं है? क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं क्रोमोसोम बनाने के लिए, क्या ये टीलोफेज में होता है? न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्री फॉर्म्स. ऑप्शन सी, न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स होते हैं अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट होते हैं और क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, या फिर क्रोमोसोम्स क्लस्टर्स होते हैं एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट. ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट रिस्पॉन्स है 19th का? That is, most of the students have replied correct. It is B. Absolutely perfect. A, chromatin condenses to form chromosomes. And then D, that is centromeres split हो जाता है और chromatids भी separate हो जाते हैं. Question number 20. एक स्टेज माइटोसिस में that begins in mid anaphase and completed with telophase. माइटोसिस की एक स्टेज है जो कि शुरुआत तो होती है मिड ऑफ द एनाफेज, मिड ऑफ द एनाफेज इट बिगिंस एंड कंप्लीट होती है टीलोफेज पर. विच स्टेज इज दिस? Which stage is this? साइटोकाइनेसिस क्या होता है? अगर आप क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 को थोड़ा सा कोरिलेट करोगे सो यू विल गेट अ क्लू. ठीक है? इसका करेक्ट ऑप्शन इज बी. दैट इज कार्योकाइनेसिस. इट बिगिंस एट द मिड ऑफ द एनाफेज और एंड होता है टीलोफेज पे, कंप्लीट होता है. ठीक है? नाउ we are moving toward question number 21 that was also asked in the year 2012. Which is incorrect about G naught? G naught के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है या गलत है? I must it up properly. सेल मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूज इन जी नोट. क्या जी नोट में सेल का मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू होता है? यह स्टेटमेंट गलत है. सेल ग्रोथ अकर्स इन जी नोट. बायोकैटलिस्ट दे हेल्प एट दिस स्टेज और माइटोसिस अकर्स आफ्टर जी नोट. Correct. Its option is D.
mitosis occurs after G note. Okay. Question number 22 had been asked in the year 2012 as well. It asks, beads on the string of A are seen in B which condense to form chromosome in C stage of cell division. Question number 22 हमें बता रहा है beads on string of A जो कि विजिबल होती है B स्टेज पर एंड जो कि कंडेंस होती है और क्रोमोसोम बनाता है C स्टेज पर. सेल डिवीजन का एक स्टेज है जिसमें a beads on string A that is actually seen at B and then it gets condensed and form chromosome. क्या सुपर कॉइल्ड होता है, क्या कंडेंस होता है and then क्या फ्रेम होता है. If you had stressed on the previous class, so you would be able to answer it correctly. And your options यहाँ पे जो A है वो क्या क्रोमोनेमा है, B chromatin, C मेटाफेज. A chromatin, B chromatid, C मेटाफेज. C chromonema, B chromosome और C एनाफेज. While D chromonema A, B is chromatid and C is एनाफेज. तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मोस्ट ऑफ यू आर अटेम्प्टिंग रॉन्ग. ध्यान से देखो. सी कौन सी स्टेज हुई? कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम एंड इट इज सीन. सोचो क्या स्ट्रक्चर है दैट इज. द करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्रोमोनेमा आर सीन इन क्रोमेटिन और क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है एट द स्टेज मेटाफेज. है कि नहीं? यस. चलो क्वेश्चन नंबर 23. Collagen interferes with cell division because of what? A. Splitting of chromosomes, क्रोमोसोम के स्प्लिट होने में. B. Non-pairing of chromosomes, it doesn't allow chromosome to get unpair. Option C. डबल रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम का डबल रेप्लिकेशन होता है. या फिर नॉन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल्स, स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है. ये इसका कॉलिशीन का इंटरफेयर्स सेल डिवीजन में होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, अक्रेंस होता है. क्यों? क्योंकि the correct option 23rd everybody responded D. Yes, that is perfect. It is the correct one. Non formation of spindles, and the same question was asked in the year 2012. If we talk about question number 24, so that was also asked in the year 2013. What does this question tell us actually? The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosomes is called what? Arey wah, everybody started answering. That's great. The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosomes is called what? A. Bivalent, B. Axoneme, C. Equatorial plate, or D. Kinetochore. Question number 24, and the correct answer
no doubt is A, that is bivalent, right? Question number 25. A stage in cell division. सेल डिवीजन की एक स्टेज है, इज शोन इन द फिगर. हमको सिलेक्ट करना है द आंसर विच गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. क्वेश्चन समझ में आया? और इसके ऑप्शंस हैं ये. ए, साइटोकाइनेसिस, जहां पे सेल प्लेट बनती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटर सेल्स के बीच में. अरे यार, करेक्ट आंसर्स आना शुरू हो गए. अरे वाह, दैट्स क्विक, अमेजिंग. या फिर टीलोफेज, जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER एंड द न्यूक्लियस नॉट रिफॉर्म्ड येट. या फिर टीलोफेज, जहां न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म्स. और डी, लेट एनाफेज, जहां क्रोमोसोम्स मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स नॉट प्रेजेंट. In question number 25, waiting the response of your alls. Answer me which one is the correct option for. Yes, everybody is answering mix match, but the correct option is C, telophase, where nuclear envelope reforms. जब सारी साइकिल कंप्लीट होती है और न्यूक्लियर एनवेलप और द मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाते हैं और गोल्गी कॉम्प्लेक्स विल स्टार्ट रिफॉर्मिंग ओवर देयर. क्वेश्चन नंबर 26, that was also asked in the year 2013. During the meiosis 1, the chromosomes start pairing at where? meiosis 1 के दौरान जो क्रोमोसोम है उसकी पेयरिंग कहां पे होना शुरू होती है? ए, जाइगोटीन, बी, पैकिटीन, सी, डिप्लोटीन या डी, लैप्टोटीन. क्विक, एवरीबॉडी मस्ट आंसर. यस, absolutely correct. The correct option is A, zygote. Now we are moving toward question number 27. That was also asked in the year 2013, and the question is, during the metaphase stage of mitosis, spindle fibers attach to chromosome at. Question, during the metaphase stage of mitosis, माइटोसिस की जो मेटाफेज स्टेज होती है उसमें जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम से कहां पर अटैच्ड होते हैं? ए, काइनेटोकोर, बी, बोथ सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर, सी, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर एंड द एरियाज एडजॉइनिंग सेंट्रोमियर, और द डी, सेंट्रोमियर. A, correct, kainetoko. Question number 28. A stage of mitosis, ये mitosis की एक stage है and is shown in the diagram. Which stage is it, at what are its characteristics? ये कौन सी stage है और उसका क्या characteristic figures है? Just check out this properly, then you would be able to answer. I stress on that thing कि alignment हो जाता है. कैसे, किसका, कब, कहां. Right. So here we go. Metaphase, spindle fibers attached to the kinetochore, centromere split and the chromatids separate. Option B. Metaphase, the chromosomes move to spindle equator, chromosomes made up of two sister chromatids. C. Anaphase, centromere split and the chromatids separate and start moving away. And D. Late prophase,
the chromosomes move to spindle equator. फटाफट बच्चों आपके आंसर्स चाहिए. There is a requirements for your responses in a quick manner. Quick, everybody answer. And the correct option is B, metaphase. Chromosomes move to spindle equator. I told you, stress on that. Chromosomes made up of two sister chromatids. Okay, so here your all response are correct. Question number 29, that was also asked in the year 2013. क्या होता है इसमें? Onion root tip. During metaphase stage of mitosis, the number of kinetochores will be. कितने होंगे? In onion root tip, during metaphase stage of mitosis, mitosis की जो metaphase stage है, उस दौरान जो onion root tip है, उसमें कितने kinetochore होंगे? 4, 8, 16, 32. जल्दी. $32. Okay, it's D. The correct answer is D. बेटा फटाफट response करो. We don't have much time. Number of questions are there. Many. Answer is D, 32. Okay. Once we'll have a recap class, that's going to discuss in detail about. Question number 30. In a diploid cell, at which stage of cell cycle the amount of DNA is doubled? Diploid cell है. Diploid cell में जब cell cycle की वो कौन सी stage होती है जब DNA का amount double होता है, जब DNA would be in double. G1 G2 phase, G0 phase, S G2 या M phase और D only S phase. It's D, S phase, because that is the phase जहां पे DNA recombination takes place. तो stress on that thing. Don't get a single confusion regarding the same. क्योंकि इससे related एक question ऊपर आया था. In the year 2014, the question was asked, interval between the two successive cell division is called. Cell division के जो दो segments होते हैं, दो parts होते हैं, उनके बीच का जो समय होता है, उसको क्या कहते हैं? Cell cycle, interphase, S phase और interkinesis. क्या कहलाता है बच्चों? जल्दी 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 जल्दी. सिर्फ एक ही ने अभी तक आंसर किया है. What about rest? Interval between two successive cell division. Cell division जो दो segments है, उसके बीच वाला जो part है, वो क्या कहलाता है? Recall करो that circle जिसमें when we had that square shaped diagram जहाँ पे हमारा एक particular G1 phase होता है, X phase होता है, G2 phase होता है, then सारा division वाला procedure आता है where it applies metaphase, anaphase, prophase, like that. Jaldi jaldi, quick quick quick. Your response is awaited about. It's B, interphase. Interphase is that occurs in between the successive cell divisions. Question number 32. एक बैक्टीरिया डिवाइड्स इन एवरी 1 मिनट. हर मिनट अगर एक बैक्टीरिया डिवाइड होता है, अ कप इज फिल्ड इन 1 आवर. द टाइम टेकन टू फिल 1/4 कप इज कितना होगा? इट वॉज आस्क्ड इन द ईयर 2014. यस, फटाफट रिस्पॉन्स करो मुझे. सेल डिवीजन रिकॉल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32. इन दैट मैनर कितना टाइम लग रहा है? 58 मिनट्स. It's D.
Question number 33. Which of the following is not the characteristics of prophase? इनमें से प्रोफेज का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? वहां पे साइनेप्सिस होता है, नहीं होता, सेग्रीगेशन होता है, नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर होता है, नहीं होता, काइज़माटा का फॉर्मेशन होता है या नहीं होता? क्विक. Waiting for your response. Which of the following is not the characteristics of prophase 1? Prophase 1. 33 question number is 33 question number. Then the correct option is B. Absolutely perfect. Segregation is not the characteristic feature of prophase 1. Centromere split in which stage of cell division? Centromere split in which stage of cell division? सेल डिवीजन के किस स्टेज पर सेंट्रोमियर अलग अलग होता है? एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज या मेटाफेज? क्विक, इट्स सो इजी, इतना समय नहीं लगना चाहिए बेटा, जल्दी. यस, एनाफेज. एब्सोल्युटली परफेक्ट. क्वेश्चन नंबर 35. एस फेज में, सेल साइकिल के एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस टू हाफ इन ईच सेल, या फिर अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, या फिर अमाउंट ऑफ डीएनए, मेरे क्वेश्चन बोलने से पहले बच्चों के रिस्पॉन्स आ गए, दैट इज अमेजिंग. अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स सेम इन ईच सेल और क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड. यस, करेक्ट, इट्स बी. अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल. डीएनए रिकॉम्बिनेशन will also only occur at that S phase. तो सोचने का समय ज्यादा हमें नहीं लगाना चाहिए. And we are moving toward the question number 36. Question number 36, what tells about, that was actually asked in the year 2014 as well. During which phase or the phases the cell cycle of cell cycle amount of DNA in a cell remains 4C level if the initial amount is denoted as 2C. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं and you have been studying so many times. टू सी 4C लेवल्स, यस, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. G2M फेज में, G0 G1 फेज में, G1 S फेज में और ओनली G2 फेज में. इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूंगा. इट्स क्यों डी क्यू वाई डी, ऑप्शन डी क्यों आ रहा है? थिंक अबाउट क्वेश्चन अगेन. वाई नॉट G2 और M? it's A. The question number 37. The enzyme recombinase is required at which stage of meiosis? The enzyme recombinase is required at which stage of meiosis? Dikinesis, pectine, zygote या diplotin? Come on, response. Yes, absolutely correct. It's B. That is pectine. The enzyme recombinase is required at pectine stage of meiosis. Question number 38. Meiotic division में क्रॉसिंग ओवर कहां पर किस दौरान होता है? इन meiotic division क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग. फटाफट आंसर बताइए आप लोग. I had explained that in a better way and you know that very well. meiotic stage division में जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो किस दौरान होता है? 38 क्वेश्चन नंबर.
Correct. Your all response are correct. It's D, pachytene. The complex formed by a pair of synapse homologous chromosome is called what? Is called what? Kinetochore, bivalent, exoneme or equatorial plate? 39 का हाँ, correct option is yes, it's B, bivalent. The complex formed by a pair of synapse homologous chromosome, synapse one, है ना? So this is bivalent. You remembered that yesterday's class I explained about. So here, question number 40. The centromere or the primary constriction of the chromosome contains rings of proteins. उसमें proteins की कुछ rings होती हैं that are intimately associated with the spindle fibers, जो कि spindle fibers से associated रहते हैं. तो इन rings को हम कहते क्या हैं? Centrioles, secondary constrictions, asters और kinetochore. Correct. The correct option is D. It's kinetochore. You remember that asterisk sign that I had explained in that diagram of the previous classes. Question number 41. Spindle fibers of a mitotic cell consist of what? Actin, fibrin, collagen, tubulin. Spindle fibers of a mitotic cell consist of what? Actin, fibrin, collagen or tubulin. What will be the correct option for question number 41? It is D. Absolutely, that is tubulin. Question number 42 that was asked in the year 2015, and it is, which of the following processes takes place during pachytene stage of meiosis? Appearance of recombination nodules, formation of synaptonemal complex, dissolution of synaptomal complexes or the terminalization of chiasmata. Among these four, which one is gonna to takes place during pachytene stage of meiosis? याद करो pachytene किस phase में आता है और वहां पे उसका क्या execution हो रहा था. What was that actually being occurred over there? The correct one is question number 42 का जो correct option है that is क्यों? B क्यों? A क्यों नहीं? Why not A? The appearance of recombination nodules. Question number 43. In S phase जो अमाउंट है डीएनए का, that is as well as number of chromosome doubles in each cell, doubles but number of chromosomes remain same in each cell, number of chromosomes remain unchanged in each cell but amount of protein doubles, and the remain same in each cell but number of chromosomes double. Question number 43. S phase में जो डीएनए का अमाउंट होता है वो क्या, कैसे, कब, कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 43. द करेक्ट आंसर इज बी, डबल्स बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम इन ईच सेल. ए क्यों होगा? एज वेल एज नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल इन ईच सेल? नहीं बच्चों, ये ध्यान रखने की जरूरत है. उसका जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है, लेकिन जो क्रोमोसोम्स है इट रिमेन सेम इन ईच सेल. डीएनए, क्रोमोसोम, जीन्स, ये कुछ चीजें हैं टू यू नीड टू स्ट्रेस ऑन बेटा. क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें, पहले क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन अ करेक्ट सीक्वेंस. बच्चों ये तो बहुत इजी है. अरे वाह, ऑप्शंस आना शुरू हो गए. दैट्स अमेजिंग. करेक्ट 44 का इज BACD. साइनेप्सिस होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, टर्मिनलाइजेशन होता है और डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होता है. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 45. एक सोमेटिक सेल है दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड, उसने अपना एक एस फेज वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है ना. सो एज कंपेयर टू गैमेट ऑफ द सेम स्पीशीज, उसमें क्या होगा?
ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम का नंबर डबल होगा और डीएनए का अमाउंट चार गुना होगा, या फिर 4 गुना होगा क्रोमोसोम का नंबर और डीएनए का अमाउंट डबल होगा क्रोमोसोम्स और डीएनए भी डबल होगा, और क्रोमोसोम्स तो सेम रहेगा लेकिन जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? यस, फटाफट बताइए। 45 का, दैट इज ए, एब्सोल्युटली परफेक्ट। ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स जो हैं वो डबल हो जाएंगे और जो डीएनए का अमाउंट है दैट विल बी 4 टाइम्स। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हमने ऊपर वाली स्लाइड में किया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 46 इज दिस, हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। उसमें कॉलम 1 साइनेप्सिस, कॉलम 2 है एनाफेज 2, synthesis of RNA and protein that occurs in the zygote, C, action of enzyme that is recombinase and the G2 phase, D, centromeres do not separate but chromatids move toward the opposite poles and it occurs in anaphase. ठीक है, avoid the fifth one, somehow that was a wrong attempt. The fourth 1 2 3 4 question number 46, हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, हमें मैच करके बताना है विच इज करेक्ट वन। 1 4, दिस सीक्वेंस ए इज करेक्ट, साइनेप्सिस एनाफेज 2, बी सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन एंड द जाइगोटीन स्टेज, एक्शन ऑफ एंजाइम्स इन G2 फेज, सेंट्रोमियर्स। इसमें क्रिस क्रॉस मैनर दिया है। साइनेप्सिस किस में होता है? एनाफेज 2 में, जाइगोटीन में, G2 फेज में, एनाफेज 1 में। आपको इसके अकॉर्डिंग बताना है, राइट? तो 46 का correct option is none other than, yes, absolutely, you all responded correct, that is D, synapses, zygotine, synthesis of RNA and the protein, that is G2 phase, action of enzymes, recombinase, C, that is packitine, and then fourth one, centromeres do not separate, that will occur in the anaphase 1. Yes. Question number 47, spindle fibers attach onto, spindle fibers attach onto telomere of chromosome, kinetochore of chromosome, centromere of the chromosome, kinetosome of the chromosome. Yes, it's B, absolutely perfect, kinetochore of chromosome. Question number 48, in meiosis crossing over is initiated at, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर जो है वो कहाँ पे इनिशिएट होता है? पैकिटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन और डिप्लोटीन। हाँ, करेक्ट, यस, यू ऑल आर रिस्पॉन्डिंग मी करेक्ट, इट्स ए, एब्सोल्युटली परफेक्ट, पैकिटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स? क्या है वो? स्पिंडल फाइबर्स, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, chromosome movement or synapses. 49, which one is the correct one? It's D, synapses, absolutely perfect, absolutely perfect. Now question number 50, when cell has stall DNA replication fork, which checkpoint should be prominently activated? कल मैंने पूछा था ये question, yesterday only I had asked these questions, right? Yeah, tell me about, it was asked in the year 2016, that will occur in M phase or both G2M or M phase or G1 or S phase, or it will occur at the G2 or the M phase. Where will it be executed? It's D, G2 or M. ठीक है? Question number 51, you remember that thing I had asked you in previous classes? Which of the following options gives the correct sequence of events during the mitosis? कौन सा correct sequence है? It was asked in the year 2017. Condensation होता है, nuclear membrane disassembly होता है, arrangement at equator, centromere का division होता है, segregation होता है, and further telophase पर closing हो जाती है, या फिर it takes about B option, C option और option number D. Which one is correct? 51 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बच्चों? जल्दी। Yes, the first one is absolutely correct.
Question number 52. Anaphase promoting complex is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cells. अगर APC anaphase promoting complex is defective in human cell, अगर human cell में वो defect हो जाता है तो which of the following is expected to occur? Chromosomes will be fragmented, chromosomes will not segregate, recombinations of chromosomes arms will occur, or chromosomes will not condense. I had given a teaser in yesterday's class. It is. Who's going to answer me the correct one? 52 का. That is absolutely perfect. B. वहाँ पे segregation नहीं होगा. The stage during which separation of the paired homologous chromosomes begins is packaging, diplotin, dikinesis, or zygote. Packaging, diplotin, dikinesis, or zygote. The correct option is B, that is diplotin. It is a stage during which separation of paired homologous chromosomes begin. कहाँ शुरुआत होती है भाई? पैकेटिन में क्यों होगा? Cell in G0 phase entered the cell cycle, suspended the cell cycle, terminate the cell cycle या exit the cell cycle. 54. Question number 54. Cell in G0 phase वो सेल साइकिल में एंटर करेगा, सस्पेंड करेगा, टर्मिनेट करेगा या एग्जिट करेगा? एग्जैक्टली इट विल एग्जिट द सेल साइकिल. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ द सेल साइकिल, दिस इज वेरी इजी. जल्दी क्विक आंसर बता दो मुझे. ए बी सी ओ डी कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? करेक्ट, इट्स सी. G1, S, G2 and then M phase will occur. Some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. Inactive stage, and this is called quiescent stage or the G0 stage. This process occurs at the end of what? M phase, G1 phase, S phase or G2 phase. कहाँ पे, किस phase पे that will actually occur? It is A, M phase. क्यों भाई? B phase क्यों? G1 phase पे क्यों? That thing तो completely absent हो जाएगी ना. Question number 57. Dissolution of the synaptomal complex occurs during what? पैकेटीन, ज़ाइगोटीन, डिप्लोटीन और लैप्टोटीन. जल्दी से मुझे आपके रिस्पॉन्स दीजिए. Yes, absolutely correct. It is C, diplotin. Identify the correct statement with regard to G1 phase, that is called gap 1 phase even of interphase. DNA synthesis होता है, replication का takes place होता है वहां पर. Reorganization of all cell components takes place. Cell is metabolically active, grow होती है, लेकिन वहां पे DNA का replication नहीं होता और न्यूक्लियर डिवीजन होता है. क्या होता है यहां पे? एट द स्टेज ऑफ G1 phase of interphase, what actually occurs there? Absolutely perfect. Cell is metabolically active. उसका मेटाबॉलिज्म होता है, एग्जीक्यूट होता है, ग्रो करती है सेल, लेकिन वहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता. डीएनए का रेप्लिकेशन कहां होता है भाई? जल्दी रिप्लाई करो मुझे. यस, एस फेज. मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द मियोसिस. ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. और ऑप्शंस हैं टर्मिनलाइजेशन, chiasmata, crossing over, synapses. It was asked in the year 2020. Correct option is B. Yes, absolutely perfect. है ना? That is zygotein, it's synapses. Packaging, it's crossing over. C. Diplotin, that occurs in chiasmata.
and dikinesis, it occurs in terminalization. Very quick response, good job. Which of the following stage of meiosis involves division of centromere? सेंट्रोमियर का डिवीजन किस स्टेज पर होता है? मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 या फिर टीलोफेज 2? सो क्विक रिस्पॉन्स, यस, थिंक अबाउट स्टूडेंट्स. द क्विक रिस्पॉन्स इज एनाफेज 2. yes, absolutely perfect. Question number 61, match the following one. List 1 A is there, list 2 is there. S phase, G2 phase, question stage, G1 phase. With respect to list 2, proteins are synthesized in active stage. Number 3 is interval between the mitosis and initiation of DNA replication, and number 4 is DNA replications. Tell me which options is correct among A, B, C or D. सबके फटाफट रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए हैं. इट इज 61 का ऑप्शन सी, एब्सोल्युटली परफेक्ट. क्वेश्चन नंबर 62, जब फ्रूट फ्लाई, उसका जो क्रोमोसोम्स है 8 क्रोमोसोम्स दैट इज डिप्लॉयड इन ईच सेल. ठीक है. ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट G1 phase is 8, what would be the number of chromosomes आफ्टर एस फेज? एस फेज के बाद क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन याद करो, वहां पे क्या सीक्वेंस था उसको ध्यान करो और इसका आंसर फटाफट चैट बॉक्स पे अपडेट करो. ऑप्शंस आर ए 8, बी 16, सी 4 और डी 32. Absolutely perfect. It's A, 8. Question number 63. Which stage of meiotic process shows terminalization of chiasmata as distinctive feature? Leptotene, zygotine, dikinesis or the pachytene? Very quick response. That is dikinesis. Yes. The centriole undergoes duplication. जो सेंट्रियोल्स हैं वो ड्यूप्लीकेशन की प्रोसेस में होते हैं कब? एस फेज, प्रोफेज, मेटाफेज या G2 फेज? अरे वाह, रिस्पॉन्स तुरंत, सो फास्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट. यस, एस फेज. विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग द माइटोटिक सेल डिवीजन? ये माइटोटिक सेल डिवीजन में कभी होता ही नहीं है. होमोलॉग्स क्रोमोसोम का पेयरिंग, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, स्पिंडल फाइबर्स attached to kinetochore of chromosomes, movement of centrioles toward opposite poles. 65. The correct option is yes, it's A. Pairing of homologous chromosomes, it will never occur during the mitotic cell division. The appearance of recombination nodules on the homologous chromosomes during the meiosis characteristics, it takes place what? It is a site at which crossing over occurs, it is the terminalization, it is synaptonemal complex or it is bivalent. So quick response. Question number 66, it is A, absolutely perfect. Question number 67, select the incorrect statement with reference to mitosis. Stress on the mitosis. Chromosome decondense at telophase. क्या टीलोफेज पे क्रोमोसोम decondense होता है? Splitting of centromere occurs at anaphase. All the chromosomes lie at the equator at the metaphase, or spindle fibers attached to centromere of chromosome. Correct. It's D. Spindle fibers attached to centromere of chromosomes, and ये statement incorrect है mitosis के लिए. Today's last one. Regarding meiosis, which of the statement is incorrect? Pairing of homologous chromosomes and recombination occurs in meiosis 1. 4 haploid cells are formed at the end of the meiosis 2. There are 2 stages in meiosis, meiosis 1 and meiosis 2. DNA replication occurs in S phase of meiosis 2. Which statement is incorrect regarding this? And the correct option is
It's D. DNA replication occurs in S phase of meiosis 2. बाकी सारी की सारी जो responses हैं, they are correct. So dear students, here it was an awesome experience with all of you with your respected responses. I'll let you know. Fine. Whatever the responses you said to me, Devyanshi, I'll cross check to you and update accordingly. Fine. Whatever that thing actually had occurred. So you may leave for the day, and from the next class we are about to begin in the new chapters. Fine. Okay.